This is the Hazratbal shrine, which was inaugurated after being renovated by Prime Minister Narendra Modi this week. We met a lot of people, including the people who have been involved in the development project. And they told us that a lot of things, new things have come up inside the shrine. The shrine has a local importance for the people of Kashmir, which is actually equated with the Medina in Saudi, home to a major Islamic pilgrimage site. A lot of people, a lot of tourists come here, and on Fridays there's a big namaz that happens at this shrine. But what are the things that have actually been renovated? When we spoke to the government departments, they told us that they have put a lot of lights on the grounds, that is, illuminated the shrine completely. Then they said that they have installed fountains. They have carved out a path which was earlier just wraith. So they have carved out a pakka path leading to the shrine. Then there are a lot of ornamental changes that the department spoke about. And the two key changes were the construction of a toilet for men and women who come here to offer namaz or pay their respect at the shrine for their use, alongside a Sufi center, which is supposed to be a library or a museum kind of thing that tourists can go to read about or to understand the importance of this shrine. However, when the print came here, we found that most of these things were non-functional, like the fountains were not working, the toilets that were constructed, there's no electricity, the floor is all chipped, there's waterlogging, the paint is coming off, and there are a lot of other complaints that the Waqf board who maintains this, which department that maintains this property, complained about. A reflective board reading Tourist Facilitation Center Hazratbal leads to a bricked building, but it's deserted, under lock and key, and with garbage strewn around. Inside the Hazratbal shrine, the Sufi Interpretation Center is nothing but an empty structure with chipped and damp walls, while the public toilet lacks electricity connection despite its completion for more than 3 years. All this is part of the renovated Hazratbal shrine situated on the left bank of Kashmir's famous Dal Lake that Prime Minister Narendra Modi inaugurated just last week as part of the project Integrated Development of Hazratbal Shrine to create world-class infrastructure and amenities for pilgrims and tourists. That's not all. The boundary wall constructed more than 5 years ago is worn out with no fresh paint and missing slabs. Many lamps meant for the illumination of Hazratbal Shrine's precinct installed more than 3 years ago are broken. A defunct fountain worth lakhs is now being used to dry clothes, and the aerators meant for rejuvenating Dal Lake Front are dysfunctional. The ghat remains filthy. The shrine's compound still seems to be undergoing renovation with scattered cement bags, strewn rubble and mortar and piles of wooden logs in corners. All this after the government spent over 33 crores over a period of years for the shrine's facelift to ensure a holistic spiritual experience for the pilgrims and tourists. The Hazratbal shrine, one of the most important Muslim shrines in the country, is believed to preserve Moi Muqaddas, the sacred hair of Prophet Muhammad's beard. The relic is displayed for public view on Islamic significant occasions such as the birthday of Prophet Muhammad, the last prophet. Speaking to ThePrint over the phone, Commissioner Secretary Tourism Department Yasha Mudgal said that the shrine's renovation is not a new project and the construction of its assets has occurred over a period of time. So some wear and tear is expected. She said that multiple execution agencies were involved in the project, each delivering different components to the tourist department. She said that the structures have been built. The components like the tourist center and Sufi center will soon be operationalized. According to government documents, the project was launched under the Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive called Prasad in the year 2014-2015 and was rolled out by the then Chief Minister Mehbooba Mufti in the year 2017. The Hazratbal project involved 7 executing agencies. According to a government officer, the delay in construction and renovation took place due to several reasons, including non-coordination among agencies, delay in sanctioning of funds, handovers, but still the project was completed within the prescribed time. Speaking to ThePrint on condition of anonymity, a member of the Waqf board that has been managing the shrine said that the inauguration was done in a hurry. जब से ये प्रसाद स्कीम आ गई है तो इसके तहत पहले तो बाथरूम्स बन गए, उसकी ज़रूरत यहाँ थी
उन्होंने बहुत फेमस बनाए, लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि यहाँ पर जब उर्स होता है तो लाखों लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसका फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पर कोई वॉशरूम नहीं था, वहाँ बन गए लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। लेकिन जो आपने देखा होगा कि यहाँ मेहराब जहाँ से नमाज़ खड़ी हो रही है, वहाँ पर उन्होंने एक बनाया है, वो पिलर्स पर बनाया है। हमने उस वक्त उसका एतराज़ किया है कि इसका मकसद ही कुछ नहीं है, आप ये क्यों बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हमारे फंड्स हैं तो हम किसी भी जगह बना सकते हैं, मतलब क्योंकि यूज़ करना चाहते हैं फंड्स, क्योंकि उस वक्त वो गवर्नमेंट थी तो हमारा नहीं चला है उस वक्त। लेकिन नंबर 2, आपने देखा होगा कि यार डल के साइड उन्होंने छतरियाँ 2 बनाई है, अम्ब्रेलास 2 बनाए हैं, हालांकि उसका भी कोई मकसद ही नहीं है कि वो एक जगह एक है, एक दूसरी जगह 2 है। ऐसे ही हमने उनको उस वक्त कहा कि इसका अगर आप अम्ब्रेला ये छतरी बना रहे हैं तो ये बंद भी हो सकती है, तो वो उनका मतलब ये खुली भी रहेगी तो बंद भी हो सकती है। लेकिन 1-2 साल वो चली, मतलब मैं भी यहाँ नया ही हूँ, लेकिन वाकफ़ का मुलाजमी ही हूँ, लेकिन 1-2 साल वो चले, लेकिन 1-2 साल के बाद वो मतलब बंद नहीं हुई। मकसद ये था कि परसों जब यहाँ सख्त हवाएं चली, अगर उसका वो मतलब वो बंद होती, मतलब अगर उसका सिस्टम वो होता तो हम उस वक्त वो बंद करते तो नुकसान नहीं होता। आपने देखा होगा कि वहाँ वो सब टूटी फूटी नज़र आ रही है, कि ये इसी वजह है कि जब वो हवाएं चली तो यहाँ डल नज़दीक है, सख्त हवाएं चलने के बाद वो मतलब ख़राब हो गई। तो ये यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री ने कल हमने सबने देखा कि इनॉग्रेशन किया दरगाह का, जो और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। तो यहाँ पे अभी नया क्या है जो इस सरकार के माध्यम से फंड्स दे के बनवाया गया है? नहीं, मतलब कल यहाँ रस्मी इब्तिदाई हुई है, लेकिन मकसद यही था कि उन्होंने जो बनाया है इसी का था वो। और आपने जो दरगाह के बाहर जो कार पार्किंग बन रही है वो इसी स्कीम के तहत आ रही है। अच्छा। वो अभी बन रही है। तो जो बाउंड्री वॉल है और जो बाकी की चीज़ें हैं वो पहले से ही बनी हुई? नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, इस बारे में मुझे इल्मियत नहीं है। Chairperson of Jammu and Kashmir Waqf Board, Syed Darakshan Amdrabi, however, said that minor faults aside, the initiative by the government to sanction so much money for the project and also assure that it is constructed and done well is a big achievement. प्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे से बात करने का यहाँ पे। थोड़ा सा आप हमें दरगाह के बारे में बताइए कि किस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल इसको इनॉग्रेट किया, और जो बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने प्रसाद स्कीम के तहत जो यहाँ पे वज़ू खाने, फाउंटेन्स और सूफ़ी सेंटर एक बना हुआ है जो आपको हमने दिखा दिया, ये प्रसाद स्कीम के तहत बना हुआ है। एक पार्किंग भी बनी हुई है, दैट इज़ इन माय माइंड। तो वो आउटस्कर्ट्स में बनी हुई है बाहर, वो भी प्रसाद स्कीम के तहत बना हुआ है। कल इसका इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भाईचारा है, सबका साथ और सबका विकास करके, वो सबका साथ और सबका विकास इसी से पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट, जबकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास इतने फंड्स नहीं है और हमारे पास कोई गवर्नमेंट स्कीम के तहत कोई पैसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी टूरिज़म के तहत यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जा रही है। और ये दरगाह शरीफ हमारा हज़रतबल बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पे सारे लोग हैं, सबों के अकीदत यहाँ पे हैं। यहाँ पर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस है। और यहाँ पे आज आप फ्राइडे के दिन है, अभी आप देखेंगे ये सारे ग्राउंड्स भरे हुए होंगे, लोग आते हैं और यहाँ पे दिल को उनको सुकून मिलता है, वो प्रेयर्स करते हैं, वर्शिप में वो रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये माना जाता है कि जो हज को नहीं जा सकता है, मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकता है, वो यहाँ पे आता है। यानी गरीबों के लिए ये मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और दिल को सुकून मिलता है। और आपने देखा है ये सारा ग्रैंडियर जो यहाँ पर है, ये बहुत ही खूबसूरत, ये वक्फ बोर्ड सारा अपने जो हमारे पास फंड्स होते हैं अवेलेबल, जो यहाँ पे लोग नज़र नियाज चढ़ाते हैं, उसी से ये हम सारा वक्फ कर रहा है। क्योंकि अब वक्फ वो वक्फ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब वक्फ अपने जो हमारे पास पैसा होता है उसी से हम अपने काम कर रहे हैं। आप हमारे जो भी हमने भी काम शुरू किए हैं नए सिरे से,
वो भी आप देख सकती हैं। और ये सारा जितना इस पे जितने हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं उतना इस पे खर्चा आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि सरकार जो टूरिज़म के ज़रिए से हमें पैसा दे रही है, अगर वो पैसा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सोच और समझ से जो हमारा कहाँ पे किस श्राइन में हमें क्या काम करना है वो हमसे पूछा जाता, हमसे कंसल्ट किया जाता, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर बन पाती। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दिल खोल कर प्रसाद स्कीम के तहत ही ये जो पैसे आ रहे हैं और हमारी एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, उसके लिए शुक्रिया। एक आपने बताया कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कल पीएम के इस चीज़ में कि उन्होंने दरगाह को इनॉग्रेट किया और एक सेक्युलरिज्म का मैसेज जाता है, उसके बारे में आपको क्या? देखिए, जो एक वेव थी पूरे हिंदुस्तान में कि सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, लेकिन हम सबों को ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सिख इत्तेहाद है। और आज हमने ये बता दिया, आप देखिए किस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ के श्राइनर्स को अपने हाथ में लिया हुआ है, जो प्रसाद स्कीम के तहत यहाँ पे काम चल रहा है। यानी मज़हब की कोई वो बंदिश नहीं है कि ये सिर्फ मंदिर बनाना है, मस्जिद नहीं बनानी है, दरगाह नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं और यहाँ पे देख कैसा वातावरण है, कैसा वो सब लोग खुश हैं। आप आम लोगों से भी बात करेंगे तो आप आम लोगों से भी यही देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने कल यहाँ से मैसेज दिया पूरी दुनिया को, नॉट ओनली कि हमारे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज गई, बॉर्डर पार एक मैसेज गया कि किस तरह से दरगाह शरीफ से ही इफ्तिताह हुई, इनॉग्रेशन हुई, किस तरह से दरगाह शरीफ को सजाया जा रहा है। Coming weeks before the Lok Sabha elections, the inauguration of the developmental project of one of the most important Muslim shrines in the country is being seen as an outreach to the Muslim community, which is in line with its political slogan of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. This is particularly crucial as the party seeks to expand its voter base among Muslims from the estimated 8 to 9% in the upcoming elections through several campaigns and outreach programs targeted specifically at the Muslim community. The scheme, Integrated Development of Hazratbal Shrine, was sanctioned at a cost of rupees 4,021.05 lakh, which is about 4 crore, out of which 3,393.15 lakh, which is 3.39 crore, has been allotted, and rupees 3,340.599 lakh, which is about 33 crore, has been spent. The key component of the project include site development of the entire area, construction of boundary wall of the shrine, illumination of Hazratbal Shrine's precinct, improvement of ghats and Devari path around the shrine, construction of Sufi interpretation center, construction of tourist facilitation center, installation of signages, construction of a multi-level storied car park, and of a public convenience block, among others, all of which has been completed. The caretaker of the shrine, however, pointed out that the money spent on these components does not align with the quality of material used in its construction. Here is a look at how much was spent on each component. The cost of the site development of the entire area, including construction of boundary wall, was rupees 3.57 crore, which is shown as completed. However, it was constructed more than 5 years ago, before the inauguration of the renovated shrine, and now lies worn out. The cost for the illumination of Hazratbal shrines is shown to be 12.77 lakh. Although the structure have been put up, many lamps are broken and non-functional. In addition to that, cost of illumination of site and patch-drained road along the lake front was 24 lakhs, which has now been completed. Moreover, the money spent on the multi-storied mechanized parking is shown as 1.01 crore, status of which is 100% complete in official records. However, on the ground, the construction in the periphery is still on. The construction of the Sufi Interpretation Center costs about 1.36 crore that lies empty. Similarly, the construction of a tourist facilitation center, which is not operational, costs rupees 1.17 crore. Another key component of the project is the construction of a public convenience complex with over 300 toilets for both men and women, along with an entrance gateway, for which an expenditure of 4.60 crore was incurred. Despite people using these toilets on Fridays when crowds peak, they lack electricity because the authorities have not yet applied for a connection, even though these toilets were constructed over 3 years ago.
Further, cost for improvement of ghats and their paths was rupees 7.26 crore that has been successfully done. The cost for the construction of mechanized tensile structure, which is like an umbrella, to provide shade to the visitors and the entrance courtyard is shown to be rupees 92.23 lakh, but two of the four installed umbrellas do not close and one has been broken. In addition to that, the Shesh Khana, in which the women offer namaz, was renovated after spending rupees 81.70 lakh, but the walls have cracks, the paint is chipped and damp. Going ahead, to beautify the banks of Dal Lake overlooking the shrine, aerators, that is water sprinklers, were put, which now lie defunct, in addition to a fountain in the garden along with lights that too is broken, and for this rupees 78.6 lakh was spent. Another component of this project was construction of prefabricated shopping kiosks, for which 51.88 lakh was spent, but these shops lie unused as they have not yet been allotted. The documents accessed by ThePrint also mentions the cost incurred to put up stone reflective small and big signages as rupees 31.46 lakh. The documents also show a fund for contingencies and consultancy, which has been an estimate of 43.80 lakh. The shrine is thronged by hundreds of locals as well as tourists. हजरतबल ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ. पहली बार हम लोग 2008 में आए थे. Now we came here just to show my son famous Hazratbal. Okay. And now it has changed a lot. Okay. So it is much more grander now, much more cleaner now. Okay. So we are feeling very peaceful coming to here. So it was very good experience for us. Okay. 2008 के बाद से अभी बहुत changes आए हैं कश्मीर में भी. You know, there was a time जब Yeah. बहुत डरते थे आने में. But what gets you to Kashmir now? Because people are saying कि हमें और confidence आया है to visit as tourists. So same here as well. So 2008 में जब हम आए थे ना, that time we were newly married. Okay. So this time we always wanted to show our son like how Kashmir looks like. So it is a very special place for us. So we wanted to visit Kashmir again, but again like what you said, security was safety of our family was very worrisome for us. Yes. So it was an issue for us. So we never planned to visit here. We always thought about coming here, but we never got Yeah. chance to come here. Yeah. Now this time we made an confidence. We got kind of confidence. We came here. Okay. And now we are very happy coming here. We are seeing like the way Kashmir is flourishing now. It's progressing now. That is huge. श्राइन है उसमें जो इन्होंने बोला है कि हमने बहुत सा काम किया, लाइटें लगाई, अभी इनॉग्रेट किया. हाँ, तो लाइटें अभी- लगाई है, यहाँ हाँ. से लगाई है, लाइटें लगाई तो है. पिछले कितने सालों में ये काम हुआ है और कब से जो है ये 4-5 साल हो गए. हाँ, हाँ, लगाने. तब किया था. हाँ. और 4-5 साल से कुछ और नया नहीं हुआ है. नहीं नहीं वो लगाए हैं उधर जो छतिया है, हाँ. बस ये लगाए हैं नया, और कुछ नहीं लगाया. और यहाँ से पौध बनाए हैं, बस और कुछ अच्छा, नहीं. बस यही है. और टॉयलेट बनाया है. टॉयलेट बनाया है हमारे घर के सामने. हम यहाँ ऐसे रहते हैं, यहाँ से टॉयलेट वो बनाया यूज मैंने. करते हैं लोग. हाँ, करते हैं. According to the data that ThePrint accessed from the tourism department and from other bodies of the government, this money was spent over years. The project started in around 2014-15 and went on for the last 6 to 7 years, where minor developments kept taking place over a period of time. However, now what is happening here is a blame game that has started. While the government is saying that they had carried out these changes, built all these things and handed it over to the Waqf board to maintain it, the Waqf board have said is accusing the government of not really doing their jobs properly. The result being that the mosque, which actually everybody thought is going to be beautified and something with operational things like running fountains and beautiful pathways, have not really happened on the ground. This is Ananya Bhardwaj reporting from Hazratbal Shrine with Praveen Jain for ThePrint.